we are lucky today to have us in our house, you can say Zoom house, Dr. VEDITA Singh, All India rank 68 of NEET-MDS 2023, and along with that, she is BHU rank 1. And that completes our hat trick of BHU rank 1 for last 3 years consecutively. Congratulations once again, Dr. VEDITA, to you, your family, and everybody behind your success story. Thank you so much, sir. Thank Congratulations. Congratulations, beta. So has the feeling sunk in? you. Yes, ma'am. Definitely. Definitely. You were the family and you were expecting this rank. No, not at all, ma'am. As- Not at all. This is just unexpected. I was expecting it between 200 or 300, but this 68 was just amazing. That means you were underestimating, yourself. Yes. Throughout the journey of my preparation, I always underestimate myself. I don't know why, but yeah, it is. No, but I your think- rank speaks volumes now. I Yes, think this ma'am. is a standard reply of all the toppers that I never imagined to be a top ranker, right? Yes. So Yes, like sir. everybody like usually looks up to such candidates, such doctors, such students who end up having a very good ranking, especially along with the internship. Your internship just ended in February, Yes, sir. and that too in a college like Banaras Hindu University Dental College. It is unimaginable to cope up with the pressure you face for the OPDs, postings, night duties, and whatnot. I have Yes, sir. myself seen you guys working very hard in BHU, and in spite of that, studying along with that, that too for a big exam all throughout the year. You were a part of foundation course, you were a part of live classes. Yes, How sir. did you cope up? Just please try summarize all this. Sir, I have joined the coaching institute from my third year. So I started preparing notes from there, from the recorded video actually from there. So in third year and final year, I have my notes of all the subjects, almost 11 subjects, 8 plus 3 subjects. So I have little bit confidence over those subjects कि हाँ ये मैं थोड़ा बहुत हो जाएगा. फिर जब इंटर्नशिप खत्म हुई सॉरी जब हमारा फाइनल ईयर खत्म हुआ ऑलमोस्ट इन जनवरी मिड ऑफ द जनवरी 2022 और इंटर्नशिप वाज स्टार्टेड इन फरवरी तो मैंने फाइनल ईयर की प्रिपरेशन फाइनल ईयर एग्जाम के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम माय वीकर एरियाज लाइक फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लाइक माइक्रोपैथो और फिर जब डीबीएमसीआई की लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई तो वो भी ऐसे स्टार्ट हुई कि जैसे डीएम बायोकेम इधर से स्टार्ट हुई तो मेरे लिए फेवरेबल था कि हाँ मैं पहले अपने वीकर एरियाज को कवर कर पाऊं तो उसके नोट्स बनाए और साथ साथ में एमसीक्यूज करती गई मतलब बुक से भी और ऐप से भी जो भी क्वेश्चंस थे फ्रॉम ई गुरुकुल ऐप और द डेली टेस्ट्स तो सारे साथ साथ में होते गए देन मैंने 2 सब्जेक्ट्स पर डे का वो लेकर चला था क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट को थ्रू आउट द डे स्ट्रेच करके नहीं पढ़ पाती थी तो एक सब्जेक्ट हो गया 2 घंटे तक फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्विच कर लिया या फिर एक ही सब्जेक्ट को सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चेंज कर ली फॉर एग्जांपल अभी ऐप से क्वेश्चन कर लिए फिर नेक्स्ट नोट्स देख लिया फिर कभी क्लासेस कर ली तो ऐसे करा था सर फिर स्टार्ट होते होते बहुत मतलब पहले तो बहुत टाइम लग रहा था नोट्स भी रिवाइज करो फिर क्वेश्चंस भी करो फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली होता गया और आईएनआई जब तक आया 13 नवंबर तो एटलीस्ट एक वन रीडिंग थ्रू द कंप्लीट एमसीक्यू बुक वो कवर हो चुका था और क्योंकि ये पता था कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं आईएनआई में तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की एक और बार रिवीजन कर लिया तो वो हो गया आईएनआई तक एटलीस्ट वो कंप्लीट था फिर नेक्स्ट जब आईएनआई दिया तो आई रियलाइज कि अब स्टार्ट कैसे करना है क्योंकि आईएनआई में क्वेश्चंस तो मुझे आ रहे थे पर आई वाज कंफ्यूज कि हाँ ये पढ़ा है ये भी पढ़ा है पर फिर भी मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रही थी तो मुझे पता था कि अब सिर्फ रिवीजन की जरूरत है तो फिर देन उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स पर डे 4 सब्जेक्ट्स पर डे रिविजन करा और एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन लगाना तो इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके साथ साथ 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पर डे और सर ने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था हम सबको कि जब आप बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो तो ट्राई दिस कि आप क्वेश्चन जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हो वैसे करना है कि आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जस्ट मार्क दैट लीव दैट उसको नेगेटिव या नो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड में ही काउंट करना है तो बिल्कुल वैसे ही एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे मैम वेरी गुड और फिर एग्जाम के पहले और कुछ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी तो दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट वेरी गुड
No, you actually made a timetable and you followed it. Plus, you also made ways to innovate studying. है ना कि Yes, कैसे I ma'am. can use different sources and otherwise what happens kids जो होते हैं ना they get confused कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है. How you integrated it beautifully. Very nice. अच्छा one question बेटा अभी मैं देख रही Yes, हूँ ma'am. you were into internship है ना वो भी Yes, ma'am. hectic था Definitely, बहुत definitely. हेक्टिक था है ना एंड घर हाँ. आते थे खाना खाया यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स आल्सो सो फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टाइम टू स्टडी मतलब कैसे डिड यू लाइक इन्वेंट टाइम बिकॉज ऑल ऑफ I अस हैव have 24 आवर्स यस मैम डेफिनेटली. तो मुझे पता था कि मैं कहाँ पर कितना टाइम दे सकती हूँ और कहाँ से कितना टाइम निकालना है. आई हैव टू नो माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑल्सो कि मैं कहाँ पर स्ट्रांग हूँ और किन सब्जेक्ट्स में वीक हूँ. तो मैम ठीक है हमारी सुबह from 9 a.m. we have postings from 9 a.m. to 3 or it can be 3:30 also depending upon the patient load and department. From there आई वॉन्टेड टू टेक रेस्ट क्योंकि सर ने ऐसा कहा था हमें कि आप पोस्टिंग के बाद तुरंत पढ़ नहीं सकते तो यू हैव टू टेक रेस्ट फ्रॉम दैट हैक्टिक शेड्यूल. पर मैम आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इजिली गेट पैनिक और एन एंशियस काइंड ऑफ पर्सन. तो मेरा था कि नहीं आई कैन नॉट टेक रेस्ट बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम टू स्टडी. तो मैंने तुरंत बस मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया फिर तुरंत चाय पीकर पढ़ने ही बैठ जाती थी लाइब्रेरी. बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था हमारे साथ कि आई हैव द कॉलेज लाइब्रेरी विच इज वेरी नियर टू माई हॉस्टल एंड आई हैव अ रीडिंग रूम इन माई हॉस्टल टू. तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट था कि एक बार आप लाइब्रेरी पहुंच गए फिर आप पढ़ोगे ही वहां पर. द एनवायरमेंट देयर इज लाइक दैट ओनली. So I studied there for at least 2 to 3 hours, and then I have a dinner, and then again after dinner I have a talk with my friends, having tea or coffee, and then again start studying till night. Actually, I can make out it to 12 or 1 p.m. only. And then I have to again wake up to go postings. Or my emergency posting was too hectic. At that time, I called Dr. Amit sir also, ki sir, how to manage that? Because in night posting, we have to wake up for complete 10 hours there. And then in morning, we have only can sleep only, you cannot study. And that time, live classes of medicine is going on. But the plus point is I already have medicine notes in third year only. yes The sir told me कि do not overstretch it. Just जितना हो पा रहा है उतना ही करो. Just see the notes, revise it. कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी emergency postings में. तो I just do that only, ma'am. Okay. Now that's very smart work. You know, you generated that extra time. You know, that is one, जैसे कहते हैं ना, one wisdom which we should all have from you. How we can, Yes. because, you know, we are all scattered throughout the day, what to do. You know, 24 hours, this also, this also, this also. And then we end up, especially me, you know, end up doing nothing. So I will Yes. learn this thing from you today. How you managed beautifully your time. Yeah, I have to, ma'am, because when I started my preparation, I've made my mind ki either do or die. If I have either it make it or just leave it. मतलब या तो मैं छोड़ ही दूं बिल्कुल preparation Yes, और या तो मैं correct. प्रिपेयर कर लूं. Correct. That is बस very ये good strategy. Why to, you know, be in a race if you have to lose it? Then sit, Hana, sit like the yes. rabbit. Very good. Yes, Very ma'am, good. definitely. Acha, And ma'am, bache, your okay. motivational thoughts really inspired me. A day before exam, when you said कि when a soldier goes to fight a war, does he think that he does not have sufficient weapon, ma'am? That is really helpful to me because I was very anxious the day before exam. So that really works. नहीं बच्चे, you know, from where do I get all this? Tell आप लोगों से ही ना, like from you I learned this thing कि how to manage time. Similarly, you know, Yes. you only are source of inspiration for us. So we should One all thing, thank you, you know, that you actually chose us to be a part of this wonderful journey, no? So we should thank you. Yes, ma'am, you all are guiding us ki how to be in a correct path to find your aim actually. Because if you guys were not there, how can we find our aim, ma'am? Because matlab, to work hard is a different thing, and to work hard in a right path is a different thing. So you Yes. have made us to choose that correct path. Thank you. but Dr. Acha, Vedika, it's like all this on one side. See, Yes, sir. there is a path which is not hidden or something, like it is shared with everybody. Like you have to do this, everybody knows that. But not everyone is, like, I would say, dedicated enough to manage a balance, especially in a college like yours, Banaras Hindu University Dental. And
coming out of that stressful life and then studying also, revising also, it's not everybody's piece of cake. If you put Yes. me in your shoes, like I will not be, I know I will surrender on day one, or maybe maximum I'll survive one day. The Because I know, BHU's postings are the heaviest. They are the heaviest throughout India. I've been talking to students, and BHU postings are busiest. And Yes, still you ma'am, managed, definitely. very good. still like Abhina, almost every 3-4 weeks we get call, I get to interact with Dr. Purva Rai and other students who are doing PGs, and now when they talk about their PG experience, it is altogether like you can say double or triple of the workload what you are doing in your internships. So really Hmm. hats off to you, and with Hmm. managing then studies also. Hmm. Dr. Vedita, can you just put up little summary on your attempt of the paper exactly? Because paper is like NEET paper, for many it was easy, many gave a verdict it was moderately difficult, then questions were easy, not easy. What exactly you felt on the day of exam in those 3 hours? What was your strategy in like attempt, how to attempt the paper and all that? Can you just, and how many you attempted exactly? Sir, I have attempted 231 out of 240. So, sir, when I started exam, I started from my clinical subjects because that is my strength. I can do better in that. So from clinical section B, I have started. There, I have attempted in first go. I have to do only those questions for which I'm very sure कि ये तो गलत नहीं हो सकता. So there I have left only 10 questions there, and I have attempted everything there only. And then when I switch off to question section A, which is basic portion, so there I have left 15 questions there because that is a little bit difficult for me. So there are some repeats for pharma. Actually, medical repeats were there in pharma. I felt that. And yes, biochem से भी ठीक questions थे. Biochem is weaker area. My weaker area was biochem. So it's a little bit difficult for me. So and in the second attempt, when I have to revise the paper, so I will do those questions which are left. I have to revise only those questions which are left. कि अब where I have to think कि ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है. So then I have left 5 questions in section B and 4 questions is left in section A. So total 231, and negatives were, sir, 47. I got negative. So That's pretty good. paper was 20% moderate for error. me. Yeah, Paper was 20% error moderate. is like if you have made 20% error, I would say it is 100% strike rate from your side. You couldn't you can say have gone far beyond, because that no, those 9 questions still restricted you to some extent. Yes, sir. But getting Yes, sir. 20%, restricting your negatives to 20% means you have had to hit the jackpot that day. I think we had covered this part during the last days when we were discussing how to attempt the paper and what all, how many negatives and all were really possible. Yes, sir. Yes, sir. You have made a video on that. I have seen that. So अच्छा बच्चे yes, बताओ like medical subjects हैं, you found a part a little difficult है ना, not much, it was easy है Yes. ना, it was all red है ना, Yes, but ma'am. 15 questions so obviously ना they will give you, otherwise the obviously 15 questions, so even the MBBS people leave in their own medical subjects, Yes, right? ma'am. So it was good paper, easy paper, right? So what Yeah, would you yeah. like to tell your juniors how to study the basics, because they are very afraid of that, like you are Yes, afraid definitely, of ma'am. biochem, but Yes, are you still definitely. No, are you not still now, actually. not now? Basics के लिए I would say कि juniors should not have to go through the books. Actually, standard books को पढ़ने का time अभी नहीं है. So the Yes. notes of coaching is sufficient because you know कि what is being asked in the question and you taught us that only. So it is a wise step to go through the coaching notes only and solve the previous year papers. That is sufficient for that. And ma'am, you have told us to solve Mudit Khanna for medicine. I have done that. Yes, Pritesh very Singh good. for general surgery. So I have also done that. And for Sparsh Gupta for pharmac, I have done that. So Yes. whatever your institute says to you, it's for your benefit. So juniors should have do that at least. Very good. Very good. And for clinical subjects?
मतलब the क्लिनिकल paper was सब्जेक्ट easy. डेफिनेटली मैम, क्लिनिकल्स फॉर इजी, मतलब सब आ रहा था, ऑलमोस्ट आ रहा था। और मैम सिली मिस्टेक्स सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो कोई ये बात हो नहीं, वो तो जाता एक टेम्परामेंट होता है ना, वो तो उसमें कभी ना कभी कुछ तो होता ही है. है। यस मैम। So when you क्लिनिकल came out of the room, क्या लगा था कि हो गया आज तो? नहीं, नहीं. मुझे नहीं लगा था। अरे. डेफिनेटली नॉट But मैम। like I've been seeing how calculatively, you have done your paper. Just like you told, itna mera negative, itna first round, itna ye. You were so well aware, in your senses while giving the paper. Normally क्या होता है ना, बच्चे they are like पूरा घबरा जाते हैं, cold clammy feet हो जाता है. And you were like यस cool and calm. कैसे? How were you that calm? मैम, दी वन स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सेवरल Hmm. टेस्ट सीरीज, एवरी संडे आई हैव टेस्ट टू गिव, तो Hmm. दिस मेक्स मी लिटिल बिट confident at that day. Very good. And you used to give all tests? Definitely, yes, ma'am. And you used to worry about the rank? A little bit. Okay. So what you used to do, beta, just say if you are not able to do a test, will you note down those questions somewhere? हाँ, yes, definitely, ma'am. I have a diary where I Hmm. have write down all the questions which I've made negative. And Hmm. मैम एक ही क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं, ऐसा भी होता है कि आपको Hmm. पता है कि तो ये, और Yes. वो डायरी फिर रोज सुबह, मतलब लास्ट के 1 मंथ में मैंने ये किया था कि उस डायरी को रोज सुबह फॉर एटलीस्ट 1 आवर मैंने देखा है, मतलब Hmm. एटलीस्ट 20-30 पेजेस पर डे, Hmm. Hmm. तो दैट हेल्प मी अलॉट। और लास्ट टाइम पर मैम ऐसा भी होता है, बहुत वॉलेटाइल कंटेंट होते हैं, जैसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, सम क्लासिफिकेशंस आर Hmm. देयर, तो आई हैव टू प्रिपेयर अ स्टिकी नोट्स, आई मीन आई हैव टू स्टिक ऑन द वॉल्स इन Hmm. फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन ऑलवेज सी देम। Hmm. तो आई, इट वर्कड, एक्चुअली इट वर्कड आल्सो, बिकॉज लास्ट Hmm. मोमेंट पर यू कैन ओनली सी व्हाट इज द वॉलेटाइल कंटेंट फॉर यू, Hmm. तो आई हैव सीन दोस थिंग्स और Hmm. जस्ट That सिट is इन द the एग्जाम। winner's 20th copy. We have 19 subjects, and then Yes. winners have a 20th diary or a copy. है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. this has come as a common factor amongst many, many toppers. हाँ, So, I have seen one topper's interview, like she is doing this, so I followed this, ma'am, क्योंकि it wow. definitely I think it Yeah. works. Yes. Now This many was in, students will follow Dr. Vedita. yes, now they will follow you. And you just said, beta, you are a very anxious person and all that, but you are Hmm. not coming across as anxious at all. Inside you have all this calmness to do all this strategizing. Yeah, I will do this. These are my weaker points. If you accept that, okay, this is my weaker subject, then only can you work. Yes, ma'am. So that You're was a right. very good strategy you had. Thank you, ma'am. डॉक्टर अच्छा. वेदिता, जाते जाते क्या एक short and sweet message for your juniors, you can say the entire India MDS aspirants? Nation wants to know. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, मतलब क्योंकि मैंने ये पूरा 1 साल मैम बहुत ही ऐसे टेंशन और एंजाइटी में गुजरा है, तो आई वुड से फॉर जूनियर्स दैट इट इज नॉर्मल टू गेट पैनिक एट सम टाइम, टू बी एंशियस, and it is very normal to have negative thoughts. That second thought always run at the back of my mind कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, but in spite of all these, do not let these thoughts overpower you, because when you let them overpower you na, तो you will finish at that moment only. ये सब कुछ सब हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा होता है, पर ठीक है, इनको एक साइड में रख के काम करना होता है, बिकॉज यू हैव नो टाइम टू वरी, बिकॉज इफ यू वेस्ट योर टाइम टू वरी ना, तो यू कैन नॉट वर्क फॉर दैट। तो आई वुड से कि डू नॉट लेट दीज थॉट्स overpower you. It's Very yes, important. Very yes. important. Very important lesson, beta, जो आपने you have learned in such a young age. Thank This you. lesson I have understood now. Okay, no tension, just keep it aside and start working. But you learned it at such a young age. And your All because family of is there, beta? Family is nearby? yes, ma'am. My mother is Okay. there. Okay. Can we talk She's to very her? happy. Oh, can we talk? Definitely. Okay. Yes, ma'am. Call her. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, sir. अभी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है मैं
हेलो हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे नमस्कार हैं जी। मैम। बहुत बहुत नमस्कार। मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो मुबारक हो आपको। आपको। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर वेदिता का थैंक रैंक यू सर। 1 बीएचयू एंड ओवरऑल 68 रैंक के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, आपका भी बहुत इनकी उसमें योगदान रहा है। आई मीन रियली 100%। कैसे यस आपने मैम, संभाला, बता, कैसे संभाला था? क्योंकि बहुत उदास होते हैं बच्चे, बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, तो हाँ, कैसे कोचिंग आप? में मैम अच्छा नंबर कम आते थे तो उदास हो जाती थी। हम्म, मतलब नहीं बिल्कुल आप, समझाते थे तो नॉर्मल हो जाती थी। हाँ नहीं, बहुत जरूरी है बेटा। ये सबसे अच्छा आपने ये किया कि आप घर पे ही थे ना जब प्रिपरेशन कर रहे हो। हाँ मैम, एंड के 2 मंथ्स में घर पे आ गई थी। पहले तो फिर हम्म। लाइब्रेरी और रीडिंग रूम हॉस्टल में ही थे। नहीं, बहुत अच्छा। तो द मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू योर मॉम एंड डैड। उन्होंने डेफिनेटली। बहुत अच्छे से एक एटमॉस्फेयर दिया घर पर एक बच्चे को, वरना हम्म। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आफ्टर आते हैं ना हॉस्टल से पढ़ना। पर हाँ आपने हाँ। बहुत उसे अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिया जिससे बहुत अच्छा रैंक आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्ते मैम। थैंक यू डॉक्टर थैंक वेदिता एंड थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।